see the screen. Okay, let us get started with the lecture, students. Welcome back, everybody. It's so good to see you all again. Students, in the previous lecture, we started with the topic reflection of light, right? हम लोग ने रिफ्लेक्शन से चालू किया था, जिसमें हम लोग ने स्टूडेंट्स देखा था कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है इन केस ऑफ अ प्लेन मिरर, एंड वी ऑल्सो सॉ दैट जो ऑब्जेक्ट है उसका जब इमेज बनता है, ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है स्टूडेंट्स, उसकी नेचर कौन से है स्टूडेंट्स. सो इन ऑल, इफ यू कैन रिकॉल, वी सॉ five nature of the images which were generated in case of a plane mirror, students. Yes or no? We saw five nature of the images which were generated in the plane mirror. What was the first image? ऑब्जेक्ट बाहर होगा एंड इमेज अगर मिरर के अंदर होगा, व्हाट इज दैट इमेज कॉल्ड एज स्टूडेंट्स? If the image is formed inside the mirror, that image is called as a virtual image, students. Very correct. जो इमेज मिरर के अंदर बनता है वो वर्चुअल इमेज बनता है, राइट? वो वर्चुअल इमेज होता है. एंड स्टूडेंट्स, प्लेन मिरर, it always forms a virtual image, right? And then the next characteristics of image in plane mirror was, if object is of 5 feet, students, then image will also be of 5 feet, right? What does that mean, students? That means that object का size and image का size कैसे होता है students? Same होता है. So that was the second characteristics we learned, right? अच्छा, next, अगर ऑब्जेक्ट सीधा होगा स्टूडेंट्स, तो इमेज कैसे बनता है स्टूडेंट्स? हाउ इज द इमेज फॉर्म्ड? Image formed by the plane mirror is also straight, isn't it, students? And such nature of the image is called as, if the image and the object both are straight, उसको हम लोग बोलते हैं erect image. क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? We call it as erect image, right? So that was the third characteristics we learned, right? अच्छा, um, left का right, right का left, left का right, right का left, object का left becomes image का right, image का left is nothing but object ka right. What does this mean, students? What does this mean? This characteristics of image is called as lateral inversion, students. Lateral inversion, very nice. And the image so generated is called as laterally inverted image. And the last one is, students, and the last one which we learned was nothing but mirror से जितना object दूर रहेगा उतना ही image भी वही distance पे रहेगा. So object distance from the mirror is equals to the image distance from the mirror. Let us say if this is an object, if this is an object, and if this is an image, students, if this is an image, ये object है, ये image है, बीच में क्या है students? In between what we have is we have mirror. So object का perpendicular distance, students, is going to be equal to image का perpendicular distance. Are we understanding this? So this is the last property or the last characteristics of image we saw in case of the plane mirror, right? So in the previous lecture, students, what we discussed was, we discussed about the plane mirror. Now we understand about a different type of mirror. Have you been to SL World, students? SL World में is like a mirror maze. Have you been inside a mirror maze, students? Have you seen yourself in different shapes and size? Have you seen yourself in different shapes and size? Isn't it, students? So students, जो मिरर, प्लेन मिरर हमारे घर पे होता है, बट अराउंड along with the plane mirror we have different types of mirror, students. We have different types of mirror, and the other two types of mirror which we are going to talk about, or the different type of mirror in this lecture we are going to talk about, is spherical mirror, students. What are we going to talk about? We are going to talk about spherical mirror. What are we going to talk about? We are going to talk about spherical mirror, right? अच्छा, spherical mirror मतलब क्या स्टूडेंट्स? तो spherical mirror का surface, प्लेन मिरर का surface चपटा होता है. प्लेन मिरर का surface कैसे होता है? चपटा होता है, इट इज फ्लैट. बट spherical mirror होता है स्टूडेंट्स, उसका surface थोड़ा सा curved होता है. हाउ इज इट स्टूडेंट्स? spherical mirror का surface थोड़ा सा curved होता है, it has a curved surface. Are we understanding this? अच्छा, ये मिरर कैसे बनाते हैं स्टूडेंट्स? How do we manufacture such mirrors? How do we manufacture such mirrors? Or what is the idea behind this mirror? So the idea is very simple, students. If I have to make a spherical mirror, what I have to consider is, I have to consider a transparent hollow sphere. What I have to consider? I have to consider a transparent, transparent hollow sphere. ट्रांसपेरेंट हॉलो ग्लास स्फीयर. तो मुझे ग्लास स्फीयर लेना है
which is transparent, right? जिसमें से light pass हो सकता है. Now students, what I'm going to do is I'm going to cut this glass. I'm going to cut this glass from left side, and also I'm going to cut this glass from right side, isn't it students? So I'm going to cut this glass from two sides. अभी मुझे क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? मुझे ये कॉन्टैक्ट लेंस जैसा सरफेस मिलेगा. कॉन्टैक्ट लेंस जैसा सरफेस मिलने वाला है. आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? सो व्हाट आई हैव इज आई हैव टू सरफेसेस. उसका शेप कैसे होगा? कॉन्टैक्ट लेंस जैसे होगा. नाउ स्टूडेंट्स, इसका हम लोग मिरर बनाएंगे. इसका हम लोग क्या बनाएंगे? मिरर बनाएंगे. एंड वी आर गोइंग टू हैव टू टाइप्स ऑफ मिरर स्टूडेंट्स. spherical mirrors are of two types. Can you name those two? Can you name those two? आपने पढ़ा है ना? आपने स्कूल में पढ़ा होगा. That's right students. Concave and convex. अच्छा, convex mirror किसको बोलेंगे? Concave mirror कैसे बनता है? We are going to understand it shortly students. तो अभी मिरर बनेने का प्रोसीजर याद है आपको स्टूडेंट्स? कैन यू रिकॉल द प्रोसीजर? कैन यू रिकॉल द प्रोसीजर स्टूडेंट्स? अगर मुझे ये सरफेस का मिरर बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ता है? सिल्वर डिपोजिशन करना पड़ता है. व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू मेक और आई हैव टू पुट अ डिपोजिशन ऑन द सिल्वर. आई हैव टू मेक अ डिपोजिशन ऑफ सिल्वर मेटल ऑन वन ऑफ द सरफेस, राइट? तो अभी मैं क्या करता है स्टूडेंट्स? इन दिस केस व्हाट आई डू इज ये बाहर के साइड पे आई पुट सिल्वर डिपोजिशन. बाहर के साइड पे. नाउ इफ आई कंसिडर दिस सरफेस, if I consider this part, bahar ke side mein students, what I do is I make a silver deposition. In order to protect that silver deposition students, what should I cover it with? What should I cover it with students? इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, सिल्वर डिपोजिशन प्रोटेक्ट करने के लिए, व्हाट शुड आई कवर इट विद? दैट्स करेक्ट स्टूडेंट्स. मुझे इसको लेड ऑक्साइड से कवर करना पड़ेगा. सो आई कवर दिस सरफेस विद लेड ऑक्साइड. तो स्टूडेंट ये मिरर बन गया, राइट? ये मिरर बन गया. विच सरफेस इज दिस गोइंग टू बी स्टूडेंट्स? ये बाहर का जो सरफेस है, व्हाट इज दैट गोइंग टू बी? दैट इज गोइंग टू बी इधर से लाइट पास होगा स्टूडेंट्स. इधर मैंने लाइट हिट किया, विल द लाइट पास थ्रू इट? नो. सो देयरफॉर ये बाहर का सरफेस है स्टूडेंट्स, दैट इज गोइंग टू बी ओपेक सरफेस. ओपेक सरफेस. बाहर का सरफेस इज गोइंग टू बी ओपेक सरफेस. हैव यू हर्ड अबाउट ओपेक सरफेस स्टूडेंट्स? ओपेक सरफेस मतलब लाइट पास नहीं होता इधर से. अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस सरफेस गोइंग टू बी स्टूडेंट्स? व्हाट इज दिस सरफेस गोइंग टू बी? व्हाट इज दिस सरफेस गोइंग टू बी? ये अंदर का सरफेस है. ये अंदर का सरफेस है. व्हाट इज दैट सरफेस गोइंग टू बी? दिस सरफेस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस. कौन सा सरफेस है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस. सो स्टूडेंट्स, ये जो मिरर है, ये जो मिरर हमने बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है, दिस मिरर इज नथिंग बट concave mirror students. What is this mirror? Concave mirror. This mirror which we have manufactured is nothing but a concave mirror. Are we understanding this? Concave mirror में students reflecting surface is on the inside. Concave mirror में the reflecting surface is on the inside. Reflecting surface is on the inside. Remember the students. Concave mirror में रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर के डायरेक्शन में होता है या अंदर के साइड में होता है. अच्छा, नाउ लेट अस मैन्युफैक्चर अनदर टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर स्टूडेंट्स. लेट अस नाउ मैन्युफैक्चर अनदर टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर. नाउ कैन यू टेल मी where should I have silver deposition in this case students? Where should I have silver deposition in this case? पहले के केस में मैंने बाहर की तरफ सिल्वर डिपोजिशन किया. Now in this case what I'm going to do is I am going to have silver deposition on inside of the mirror. That's correct student. तो यहाँ पे मैंने silver deposition किया. And in order to protect that silver deposition students, what I'm going to do is ये silver deposition को protect करने के लिए I am going to cover it with lead oxide, right? So what is this surface going to be students? What is this surface going to be? This surface is going to be opaque surface. That's correct. Opaque surface, right? And what is this surface going to be students? This surface is going to be reflecting surface. Reflecting surface. तो students, ये जो मिरर हमने बनाया है, ये जो मिरर हमने मैन्युफैक्चर किया है, this mirror is called as convex mirror students. What is this mirror called as? This mirror is called as convex mirror. What is this mirror called as? This mirror is called as convex mirror. तो spherical mirror
are of two types. Spherical mirror are of two types. The first type is, what is the first type, students? The first type is concave mirror, and the second type is convex mirror, students. Spherical mirror are of two types, concave and convex, right? The students, is going to be very confusing. So इसको confusion को दूर रखने के लिए students, कौन सा concave कौन सा convex ये understand करने के लिए students, we are going to look at this word. So listen to me very carefully. ये hint आप याद रखो, right? We are going to listen to this very carefully. Look at this word cave. Cave मतलब गुफा होता है students. Cave मतलब क्या? Cave मतलब गुफा, right? अच्छा, आप cave के अंदर जाते हो. You go inside the cave, right? You go inside the cave. You enter inside the cave, isn't it, students? And अपना जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो भी किधर है स्टूडेंट्स, वो भी इनसाइड है, इजंट इट स्टूडेंट्स? सो सिंस रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ऑन द इनसाइड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ऑन द इनसाइड, हम लोग ये जो मिरर है उसको कॉनकेव मिरर बोलते हैं. आर वी अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट्स? सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू रिमेंबर. कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ऑन द इनसाइड. आई विल रिपीट. कॉनकेव मिरर में कॉनकेव मिरर में reflecting surface is on the inside. Are we understanding this? So this is how you are supposed to remember, students. ठीक है? Cave मतलब inside. Cave मतलब inside, reflecting surface inside. All right. So now, students, if I were to ask you to make a symbolic form of this mirror, can you draw symbolic form of concave and convex mirror, students? Can you draw a symbolic form of concave and convex mirror? Please draw symbolic representation of concave and convex mirror. Symbol बनाओ students. चलो, symbol बनाने का कोशिश करो students. Do it. Do it on your notebook and verify if you have drawn it correct, students. Do it. Do it. Do it. Do it in your notebook. Do it in your notebook. Concave mirror and convex mirror का symbol बनाना है students. Concave mirror and convex mirror का you are supposed to make a symbol. चलो, सबसे पहले कॉनकेव का देखो. आई होप यू मस्ट हैव डन इट स्टूडेंट्स. तो कैसा करने का, ऐसे क्या करने का, ऐसा कर्व बनाने का, राइट? अच्छा, कॉनकेव मिरर में स्लैंटिंग लाइंस किधर आएंगे स्टूडेंट्स? अंदर आएंगे या बाहर आएंगे? कॉनकेव मिरर में स्लैंटिंग लाइंस है, कहां पे आएंगे? अंदर की तरफ आएंगे या बाहर की तरफ आएंगे? That's correct, students. The slanting lines are going to come on the outside because outside surface is the opaque surface. तो ये आपका concave mirror बन गया. क्या बन गया ये? Concave mirror, right? And students, if I talk about convex mirror, चलो convex mirror का symbol बनाओ. Convex mirror का symbol बनाओ. Convex mirror का symbol बनाओ. Convex mirror में students, where are going to be the slanting lines? Where are we going to have slanting lines? Is it going to be on the outside or is it going to be in the inside, students? That's correct. The slanting lines are going to be on the inside. The slanting lines are going to be on the inside, right? So here we are going to have, this symbol is the symbolic representation of convex mirror. So ये हो गया convex mirror, right? So this is very important, students. आपको कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स में आपको अच्छे से याद रखना है कि द इनर सरफेस इन केस ऑफ कॉनकेव is the reflecting surface, right? You should not get confused with this. All right. So now, moving on with the next part of this particular concept, ये concave and convex mirror है ना students, उसको हमने और एक नाम दिया है. Concave and convex mirror, they have two more names. उसका अलग अलग नाम है. Let us try to understand. Let us understand the different names of concave and convex mirror. ठीक है? So now what I consider is, I draw this mirror. Can you recall which mirror is this, students? Which mirror is this? Which mirror is this? That's correct. This is a concave mirror. कौन सा mirror है? Concave mirror है. Right. अच्छा. अभी students हम लोग क्या करते हैं ना? हम लोग incident rays लेंगे. क्या लेंगे students? We are going to take incident rays. So we are going to take, or we are going to draw incident rays.
ठीक है. So we have incident rays. Incident rays कैसे होते हैं students? Incident rays, they move towards the mirror. Incident ray goes towards the mirror, right? So now students, we have incident rays. They are parallel to each other, and this incident rays, they are going to hit the concave mirror. This incident rays, they are going to hit the concave mirror, right? Acha, now after hitting the concave mirror, after incident rays hit the concave mirror, students, मिरर कौन से रेस जनरेट करने वाला है? कैन यू टेल मी? इंसिडेंट रेस जब कॉन्केव मिरर या कोई भी मिरर को हिट करेंगे, विच रेस आर गोइंग टू जनरेट? विच रेस आर गोइंग टू बी जनरेटेड? दैट्स करेक्ट. मिरर जनरेट करेगा रिफ्लेक्टेड रेस. कौन से रेस जनरेट करने वाला है? इट इज गोइंग टू जनरेट रिफ्लेक्टेड रेस. नाउ स्टूडेंट्स, कॉन्केव मिरर का खासियत ये है कि ये सारे के सारे रिफ्लेक्टेड रेस को पास में लेके आता है. सारे के सारे रिफ्लेक्टेड रेस को कन्वर्ज करता है. सारे के सारे रिफ्लेक्टेड रेस को कन्वर्ज करता है एंड पास में लेके आता है. ऑल द रेस दे कन्वर्ज एंड दे मीट एट अ सिंगल पॉइंट. ऑल द रेस कन्वर्ज होते एंड साथ में आ जाते हैं. आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? एंड स्टूडेंट्स, सिंस कॉन्केव मिरर converges the reflected ray. Listen to me very carefully, students. Since concave mirror converge all the reflected rays, ये concave mirror को converging mirror भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Concave mirror is also called as converging mirror. Are we understanding this? Concave mirror is also called as converging mirror. The simple reason is, after reflection through the concave mirror, all the reflected rays converge and meet at a single point. तो सारे reflected rays मिलते हैं, सारे reflected rays converge हो जाते हैं and they meet at a single point, and hence we call it as a converging mirror, right? So concave mirror is called as converging mirror. Concave mirror is called as converging mirror. इसको याद कैसे रखने का स्टूडेंट्स? इसको याद रखने के लिए 3 C's याद रखने के. 1, 2, 3. You are supposed to remember C, C, C. What are you supposed to remember? There's a hint. Students, we have a hint. What is the hint? What is the hint? C, C, C. What does CCC stands for? Concave, concave, converging, converging. So CCC stands for concave, converging. Concave mirror is also called as converging mirror. राइट? तो कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है, दिमाग में छाप लेने का. और अगर एग्जाम में याद नहीं आया कॉनकेव मिरर कौन सा मिरर है, तो आपको क्या याद रखने का है स्टूडेंट्स? सी, सी, सी. दैट इज केव कन्वर्जिंग. सो दिस इज द कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्टेड रेस को कन्वर्ज करता है. दैट इज द रीजन व्हाई वी कॉल इट एज अ कन्वर्जिंग मिरर. वी कॉल इट एज अ converging mirror. Acha, now let us talk about convex mirror, students. Let us now talk about convex mirror. So let us draw a convex mirror first, right? तो मैं क्या किया है? convex mirror बनाया, convex mirror बनाया. अच्छा, slanting lines किधर आएगा स्टूडेंट्स? slanting lines किधर आएगा? अंदर की तरफ slanting lines होगा या बाहर की तरफ slanting lines रहेगा? That's correct. The slanting lines are going to be on the इनसाइड. तो बाहर का सरफेस होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, राइट? नाउ स्टूडेंट्स, मैं क्या करने वाला है? आई एम गोइंग टू कंसिडर इंसिडेंट रेस. व्हाट एम आई गोइंग टू कंसिडर? आई एम गोइंग टू कंसिडर इंसिडेंट रेस. सो आई कंसिडर इंसिडेंट रेस. आई कंसिडर इंसिडेंट रेस. अच्छा, ये इंसिडेंट रेस कैसे सब स्टूडेंट्स साथ में है? दे आर पैरेलल टू ईच अदर. इजंट इट स्टूडेंट्स? Isn't it, students? All the incident rays are parallel to each other. अब सारे बच्चे 9th standard में, all your friends are together right now. All your friends are together right now. All your friends are together right now. Isn't it, students? But after 10th standard, students, after 10th standard, कोई साइंस में जाएगा, कोई आर्ट्स में जाएगा, कोई कॉमर्स में जाएगा, कोई डिप्लोमा करने जाएगा. Isn't it, students? Right now you are together
after 10th standard, after 10th standard, you all are going to diverge. What are you going to do, students? You all are going to diverge. So similarly, students, ये जो convex mirror है, convex mirror में the reflected rays which are generated, they diverge from each other, students. The reflected rays which are generated, they diverge diverge from each other and hence convex mirror को हम लोग diverging mirror बोलते हैं. क्या बोलते हैं students? Convex mirror is also called as diverging mirror because वो reflected rays को diverge कर देता है. Reflected rays को क्या कर देता है? वो इधर उधर फेंक देता है. Are we understanding this? So this is the concave and the convex mirror, students. This is then convex. Sorry, this is the concept of concave and convex mirror. तो कॉन्केव मिरर इज कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर. याद कैसे रखने का? सी सी सी. Why do we call it converging mirror, students? Because after reflection, all the reflected rays they converge and meet at a single point. Whereas if I talk about convex mirror, students, convex mirror में क्या होता है, students? The reflected rays which are generated because of the convex mirror, the reflected rays which are generated because of the convex mirror, what they do is they diverge. They diverge. That is, they go. They do not meet. वो इधर उधर चले जाते हैं, right? And hence we call this mirror, convex mirror, as a diverging mirror. You can make a note of this, students. Quickly, you can make a note of this. Concave mirror is converging mirror. Convex mirror is diverging mirror. Make a note of this. एंड ये शॉर्ट फॉर्म लिखो स्टूडेंट. सी 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 ये शॉर्ट फॉर्म लिखो. राइट दिस शॉर्ट फॉर्म स्टूडेंट्स. सी सी सी. राइट दिस शॉर्ट फॉर्म स्टूडेंट्स. सी सी सी. All right. So let us quickly revise what we have done so far, students. Right? Let us quickly revise what we have done so far. So far we have spoke about a spherical mirror. Right? Spherical mirror से दो mirrors form होते हैं. The first one is the concave mirror. The second one is the convex mirror. In case of concave mirror, reflecting surface is inside. Reflecting surface is inside. Whereas if I talk about convex mirror, the reflecting surface is on the outside. Right? Acha. And concave mirror is called as dash mirror. Concave mirror is called as dash mirror. Concave mirror is called as converging mirror. याद कैसे रखा? C C C. Whereas convex mirror is called as diverging mirror. Converging concave होगा तो definitely diverging कौन होगा? Convex होगा. Right? Now students, now that we have understood the concave and convex mirror, there are certain common terms which we need to understand. There are certain common terms which we need to understand in case of a spherical mirror. So let us talk about the common terms. The very important topic, students, a very important topic. Common terms in case of spherical mirror. So the topic is common terms in spherical mirror. कॉमन टर्म्स इन स्फेरिकल मिरर. ये कॉमन टर्म्स के डेफिनेशन स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सो यू प्लीज रिकॉल दिस डेफिनेशन. आई मीन रिमेंबर दिस डेफिनेशन वेरी प्रॉपरली. राइट? सो लेट अस नाउ गेट स्टार्टेड विद द कॉमन टर्म्स. ठीक है? ऑल राइट. सो नाउ व्हाट आई डू इज I consider a hollow sphere. I consider a hollow transparent sphere. तो ये hollow sphere बन गया. Right? All right. So this is the hollow sphere what you have. अच्छा, next. अभी क्या करता है, ये hollow sphere को मैं दो पार्ट में डिवाइड किया. ये hollow sphere को दो पार्ट में मैं डिवाइड किया. Don't write anything yet. Let me teach you the points first, and then you can write it once you have understood it, right? So here, what I do is I divide this hollow sphere into two parts, right? अच्छा, now what I do is ये जो पार्ट है स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट है, अगर मैंने ऐसे ऑब्लिक लाइंस निकाले तो विच मिरर इज दिस गोइंग टू बी?
Which mirror is this part going to be, students? That's correct. Concave. ये बनेगा concave. अच्छा, अभी मैंने ये पार्ट में slanting lines यहाँ पे बनाए. Which mirror is this going to be, students? That's correct. It is going to be a convex mirror. This mirror, this part of the mirror is going to be a convex mirror. Now, students, do you agree with me? Do you agree with me? Concave mirror and convex mirror is part of a sphere. What did I say? What did I say? Do you agree with me? Do you agree with me? Concave mirror and convex mirror is part of a sphere. I'll repeat the statement. I'll repeat the statement. मैंने क्या बोला? Concave mirror and convex mirror is part of a sphere. It's part of a sphere, isn't it, students? अभी sphere है, इसका मतलब डेफिनेटली सेंटर तो होगा. अगर स्फीयर है उसका सेंटर होगा. ये जो सेंटर है स्टूडेंट्स, दैट सेंटर इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, स्टूडेंट्स? व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज सेंटर ऑफ द स्फीयर. आई विल रिपीट. सेंटर ऑफ कर्वेचर इज सेंटर ऑफ द स्फीयर. स्फीयर का सेंटर जो होता है उसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं. कौन सा स्फीयर, स्टूडेंट्स? कौन सा स्फीयर? वो स्फीयर जिसका कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर इज द पार्ट. वो स्फीयर जिसका कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर इज द part. So how do I define center of curvature, students? How do I define center of curvature? The center of the sphere, the center of the sphere of whose mirrors is a part. Of whose mirror is a part. I'll repeat the statement, students. The center of the sphere, center of the sphere of whose mirror is a part, उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. उसको अपन क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, which is denoted by capital letter C. It is denoted by capital letter C. Let us quickly revise, students, the definition. बहुत important and बहुत easy definition है. What is the definition, students? The definition is the center of a sphere of which mirror is a part. The center of a sphere of which mirror is a part. Of whose mirror is a part. Whose भी चलेगा, which भी चलेगा. Are we understanding this? Right? So students, श्रेयस, you have to wait. You have to wait, बेटा. अभी तो चैप्टर चालू हुआ है. अभी तो कॉन्केव कॉन्वेक्स चालू हुआ है. उसका यूजेस हम लोग थोड़ी देर के बाद देखेंगे. Right? So have some patience, beta. All right. So let us now talk about the common terms first. So the first common term is center of curvature. चलो definition बोलो, students. Tell me the definition. What is the definition? Recall the definition. क्या बोला था मैंने? Center of the sphere of which mirror is a part, उसको अपन बोलते हैं center of curvature. So center of the sphere whose mirror is a part is called as center of curvature. Quickly write this definition, students. Quickly write this definition. Try to write this definition without looking, students. अगर आपको याद नहीं आया words, only then look it. Try to write this without looking, students. Try to write this definition without looking. Try to write this definition without looking, students. तो मिरर स्फीयर का जो सेंटर होता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं. That is what this definition says. Sorry. All right. Now, अभी यहाँ पे देखो students. Just pay attention here. ठीक है? I hope you must have written the definition. Now, if you try to see, students, सेंटर से लेके circumference तक मैंने एक लाइन खींचा. तो what will you call this line as?
सेंटर से लेके circumference तक, if I draw a line, what is that line called as? That's correct. We call it as radius. What do we call it as? We call it as radius. And the second common term which we are going to talk about is radius of कर्वेचर. क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो ये रेडियस क्या है स्टूडेंट्स? इट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज बेसिकली द रेडियस ऑफ स्फीयर स्टूडेंट्स. रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है स्टूडेंट्स? इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर. तो स्टूडेंट्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है उसका डेफिनेशन बहुत सिंपल है. यू विल गेट द डेफिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर फ्रॉम योर. You will get the definition of radius of curvature from your. क्या करना है पता है आपको? सेंटर निकालो, रेडियस चिपका दो. You will have a brand new definition of radius of curvature. सेंटर निकालो, रेडियस चिपका दो. Can you make definition for radius of curvature, students? You have to make definition for radius of curvature. It is very simple. ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर का ही डेफिनेशन यू हैव टू यूज. सेंटर निकालो, रेडियस चिपका दो. What is going to be the definition? Please write the definition in your notebook, students. Please write the definition in your notebook. I'll ask someone to answer me the definition. Huh? किसी को मैं बोलेगा tell me the definition. So I want everybody to write the definition of radius of curvature. Everybody try writing the definition of radius of curvature. बहुत simple है. All right. Who should I ask? Who should I ask? Who should I ask? Who should I ask? Okay. Parth. Parth Kunkunkar. Parth Kunkunkar. Parth. Parth, can you hear me? Yes, sir. All right. Did you write the definition, beta? Sir? Did you write the definition for center of curvature? Radius of curvature. Hello. Can you hear me? Sir, your voice is cracking. I'm asking, did you write the definition of radius of curvature? Hello. Hello. Okay. Are you able to listen me, students? Are you able to listen me properly? Deep Jagtap. Deep Jagtap. Deep Jagtap. Ghatkopar. Can you hear me, Deep? DN Nagar Mani. DN Nagar Mani. सब सो जाते हैं क्या लेक्चर में? भूमि देसाई. घाटकोपर भूमि देसाई. Bhumi, can you hear me? Yes, sir. All right, Bhumi, can you tell me the definition of radius of curvature? The center of the sphere whose mirror is a part Is called as radius of curvature. Wow. Sir, is it correct? Radius of curvature पूछा मैंने बेटा. Radius of curvature. क्या बोला था मैंने? क्या बोला था? इसमें से सेंटर हटाओ, रेडियस चिपका दो. क्या डेफिनेशन बनेगा? भूमि. All right. The definition is going to be the radius of sphere of whose mirror is a part. तो स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन दोनों सेम है. मैंने क्या किया? सेंटर को हटाया, सेंटर के बदले रेडियस चिपका दिया. Are we understanding this? So this is the definition of radius of curvature. So we have learned two, students. So far we have learned two common terms. The first common term is center of sphere and the second common term is
Radius of curvature. Radius of curvature is given by capital letter R. Radius of curvature is given by capital letter R. Right? अच्छा अभी उसके बाद स्टूडेंट्स उसके बाद अच्छा I say this is a mirror, right? This is a mirror. Consider this as a mirror. Reflecting surface इधर है. Reflecting surface इधर है. कौन सा मिरर हुआ ये? Reflecting surface ये साइड है, अंदर की साइड है. Which mirror is this, students? Which mirror is this? शाबाश. This is a concave mirror. अच्छा concave mirror को मैंने ऐसे उल्टा किया. Concave mirror को मैंने उल्टा किया. Right? This is a concave mirror. एंड कॉन्केव मिरर का सेंटर स्टूडेंट्स कॉन्केव मिरर का सेंटर कॉन्केव मिरर का सेंटर मतलब ये पॉइंट यस और नो स्टूडेंट्स दिस इज गोइंग टू बी द सेंटर यस तो मिरर का जो सेंटर होता है स्टूडेंट्स मिरर का जो सेंटर होता है दैट सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज पोल व्हाट इज सेंटर ऑफ द मिरर कॉल्ड एज the center of the mirror is called as pole, which is given by letter P, capital letter P. Similarly, students, ये mirror है, ये वाला surface, outside surface is the reflecting surface. Outside surface is the reflecting surface. Which mirror is it going to be, students? Outside surface is the reflecting surface. It is going to be a convex mirror. That's correct. अभी कॉन्वेक्स मिरर को मैंने ऐसा उल्टा कर दिया सुला दिया राइट कॉन्वेक्स मिरर का स्टूडेंट्स सेंटर होगा कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर होगा जो मिरर का सेंटर होता है सेंटर पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड एज पोल सो व्हाट इज पोल स्टूडेंट्स द सेंटर ऑफ द मिरर द सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज पोल I'll repeat, students. The center of the mirror, center of the mirror is called pole. Is called pole. Center of the mirror is called as pole. So, students, center of the sphere is center of curvature. स्फीयर का सेंटर जो होता है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर का सेंटर जो होता है दैट इज पोल मिरर का सेंटर इज पोल मिरर का सेंटर इज पोल स्फीयर का सेंटर इज सेंटर ऑफ कर्वेचर रिमेंबर दिस प्रॉपर्ली स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस प्रॉपर्ली ठीक है ऑलराइट नाउ ये कॉन्केव मिरर है Here I have center, right? Concave mirror का center इधर होगा ना कहीं पे तो here this point students this point is going to be pole. What is this point going to be students? Pole of the concave mirror. Similarly mirror का जो center point होगा that is pole. Mirror का center point is pole. I hope everybody understood this. So mirror का center point is called as pole. 2 dimension में student center point will be exactly at the middle part, right? So this is the middle part of the mirror is nothing but the pole. ठीक है? So center of the mirror is pole. You can write this definition, students. Quickly you can make a note of this definition, students. Quickly you can make a note of the definition, students. All right. नेक्स्ट अच्छा अभी मैं क्या करता है ना स्टूडेंट्स अभी व्हाट आई डू इज मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट लाइन देखो स्टूडेंट्स किधर से पास होता है बताओ मुझे द स्ट्रेट लाइन विच आई एम गोइंग टू ड्रॉ किधर से पास हो रहा है टेल मी The straight line which I have drawn किधर से पास हो रहा है The straight line which I have drawn किधर से पास हो रहा है सिर्फ सेंटर से पास हो रहा है क्या स्टूडेंट्स सिर्फ सेंटर से पास हो रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है नहीं The straight line is passing through center of curvature and pole The straight line is passing through
center of curvature and pole. The straight line is passing through, I'll repeat, the straight line is passing through center of curvature and pole. ये जो straight line होता है स्टूडेंट, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. व्हाट डू वी कॉल इट एज स्टूडेंट्स? ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ किया ग्रीन कलर का, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस. So what is principal axis, students? What is principal axis? The fourth common term, the fourth common term. Principal axis is the straight line. Principal axis is the straight line passing through dash and dash. Principal axis is the straight line passing through dash and dash. Principal axis is the straight line passing through dash and dash. The principal axis it is a straight line passing through किधर से पास होता है? passing through center of curvature and pole. Center of curvature and pole. So students, the principal axis is the straight line passing through center of curvature and pole. तो ये हो गया अपना fourth common term. Isn't it simple, students? Principal का axis का definition is also very simple, right? So far we have spoke about 4 common terms. There are a few more common terms, students, which we are going to eventually see. But let us quickly revise the 4 common terms, right? Let us quickly revise the 4 common terms. Acha, did you write the definition of principal axis? Did you write the definition of principal axis? All right. So students, let us talk about the definition. Acha, I'll ask few students to give me the definitions of the common terms, right? So please participate, students. Please participate, right? Okay. I would ask to Sahil Gupta. एक सेकेंड, किधर गया है साहिल? एक सेकेंड. ओके ओके. कृष्णा छेड़ा, डीएन नगर. कृष्णा छेड़ा. कृष्णा, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ बेटा? हेतवी, देवी दयाल हेतवी. डीएन नगर नम्रा शाह. Yes, sir. Yes, Navra. Can you define radius of curvature, beta? Radius of curvature. हाँ. The radius between the center Radius of the of the hollow नहीं glass and नहीं. Radius of the किसका radius? the radius of the circle. Radius of the sphere. किसका radius? The glass. The radius of Yeah, the the sphere. Right. Radius of The the radius sphere. of the sphere of which mirror is a part. Of which mirror is a Spherical. of which mirror is a part is called as radius of curvature. ठीक है, पढ़ जरा definition एक बार. Yes. Read the definition, beta. The radius. हाँ. The radius of which The radius of the which sphere. the radius of which it is a part of. The radius किसका of radius? the sphere, radius, which is beta? the part, is called the Radius of spherical curvature. glass. All right. Of which it is All the part. All right. Good try, beta. Good try. Very nice. Very nice. अच्छा. Thank you, sir. Anushri Bhor. Anushri. किंजल राउत, घाटकोपर. किंजल राउत. Acha, it seems that you are not able to unmute yourself anyways. So students, these are the definitions, do you have a doubt, students? Please unraise your hands first. And if you have doubts, only then raise your hands.
Anyone has a doubt, students? Yes, Daniel, do you have a doubt, beta? Daniel, Takshila Daniel. Daniel, Hello, sir. Hello. yes, Daniel, tell me, do you Sir, have a what is doubt? the symbol for principal axis? कुछ symbol नहीं है उसका बेटा. अच्छा, Principal no, axis does not have any symbol, right? Okay, sir. Thank you, sir. Yeah, no problem. Arman, do you have a doubt, beta? Arman Mehta. Yes, sir. Yes, beta, tell me your doubt. The same doubt. अच्छा, same doubt. So students, a very good doubt here. Principal axis का कुछ symbol नहीं होता. Principal axis is just a name. It is not represented by any sort of symbol, right? Okay. So that's it for today, students. I hope you understood the lecture. Please memorize all the common terms. Exam में ये common terms आते हैं, right? So you have common terms asked in exam as a definition, students. So I'll see you in the next lecture, students. Thank you for your time. We will end the meeting, right? Okay.